Hello everyone, welcome to my channel back, and I've come with the second part of my video, and the first part I've given in the description box, और नहीं तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में भी आप पार्ट 1 देख सकते हैं. This video contains the MCQs regarding the offenses affecting the human body and offenses affecting life. So I will begin with my first question. Which section of IPC has been declared unconstitutional and violative of Article 14 and 21 of the Constitution of India? So the options are Section 314, B, Section 301, C, Section 303, D, Section 306. So the correct answer of this question is option that is C. Section 303 is the correct answer for this question. And if I will tell you regarding this question, in the case of Mithu versus State of Punjab in 1983, Supreme Court held that this section 303 is unconstitutional and violative of Article 14 and 21 of the Indian Constitution. My next question is, in which one of the following cases section 303 of IPC was declared unconstitutional? The options are A, Mithu versus State of Punjab, B, Bachan Singh versus State of Punjab, C, Jagdish versus State of MP, D, none of the above. I've already explained in my explanation of in the previous question, so I hope you all get the correct answer, but still I'll let you know the correct answer of this question. The option A is the correct answer, which is Mithu versus State of Punjab, and the year is 1983 Supreme Court. The next question is, under which provision of the IPC the offender shall be punished only with death? So you have to remember here the question says only with the death. So options are section 302 of IPC, B, section 303 of IPC, section 304 of IPC, section 304B of IPC. So the correct answer is ऑप्शन बी, दैट इज 303. 303 में ये कहा गया था कि द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड ओनली विद द डेथ. So now it has been unconstitutional, so like it has been it does not have any effect now. And we'll move further. Question is, causing death by doing an act with knowledge that he is likely by such act to cause death is punishable under A, section 302 of IPC, B, section 304, C, section 304A of IPC, D, section 304B of IPC. The correct answer is option number 304 of IPC. This was asked in the West Bengal examination, and this 304 deals with the punishment for culpable homicide not amounting to murder. So you have to remember that this is culpable homicide not amounting to murder. Fine, we'll move to the next question. The offense of culpable homicide not amounting to murder is punishable under section. This is almost a repetitive question, and not exactly the question is repeated, but if I say that yes, the explanation part of my previous question has been repeated, but this question has been asked many a times in many of the judicial examinations, so that is why this question is repetitive. And the form of question is also being changed. The options are 304 of IPC, B, 304A of IPC, C, 302 of IPC, D, 303 of IPC. The correct answer is option number A, that is 304 of IPC. I have already told in my previous question that 304 relates with the culpable homicide not amounting to murder. And the next question is, not being armed with any deadly weapon and not expressing any intention to kill, A tied B to an electric pole with ropes and assaulted him, as a result of which B died. A committed offence punishable under section A 302, B 304, C 304A, D
328. सो आई होप आप लोगों को इसका आंसर काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, बट दिस वॉज आस्क्ड इन दी MP SJS pre examination in 2014. So it is an important question. This is kind of a illustrative question. So the correct answer is option number B, that is 304. The next question is, the accused inflicted injuries on non-vital part of the deceased which were not found to be sufficient in ordinary course of nature to cause death, but it was proved that he inflicted the injuries with the knowledge that with these injuries the victim was likely to die. The case would be punishable under which section? ये भी आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, तो लेट मी रीड आउट दी ऑप्शंस. A 302 of IPC, B 303 of IPC, C 304 part 1 of IPC, option D 304 part 2 of IPC. This is a kind of a good question, and this was asked in the UPSJS, the Higher Judicial Services 2012. So mark this question again, and if like अगर आपको थोड़ा जल्दी लग रहा होगा ये, तो फिर pause this video, read it again, mark this question an important one, and then try to solve it. The correct answer is option number D, 304 part 2 of IPC. Let me explain you. Part 2 of the section 304 is like it is the punishment is like imprisonment of either description for the term which may extend to 10 years or with fine or with both, if the act is done with the knowledge that is likely to cause death but without any intention to cause death, or to cause such bodily injury as is likely to cause death. So if you go and read the Berect also, this explanation is all there. And we'll move further to the next question. A doctor registered as a medical practitioner and entitled to practice in homeopathy only prescribed an allopathic medicine to the patient. The patient died. The doctor is guilty of A. Death by rash and negligent act, B. Murder, C. Culpable homicide not amounting to murder, D. None of these. So this was also held in a case, and let me tell you, this question was asked in the Odisha preliminary examination in 2018. I will tell you the case name, and by the way, the answer for this question is option number A, that is death by rash and negligent act, which actually comes in the conditions of he was not in a good faith. Rather, this was held in the Poonam Verma versus Dr. Ashwini Patel and others. This was in 1996 Supreme Court, where a doctor was registered as a medical practitioner and he was entitled to give homeopathy medicines only, but he prescribed allopathic medicine to his patient, and due to that the patient died. So doctor was held for the negligent act and was also liable to compensate the wife of the deceased person. So this is an important case and plus the important question also. We'll move further. Whoever causes death of any person by doing any rash or negligent act shall be punished with the imprisonment. So here the punishment will be A. 2 years or fine or both, B. 5 years or fine or both, C. 7 years or fine or both, D. 10 years and fine. So the correct answer is 2 years or fine or both. Okay? So 304A, that is the act of rash or negligent act will be punished with the 2 years or fine or both. So it is held under section 304A of the IPC. Fine. The next question is, every doctor is not responsible under section 304A of the Indian Penal Code 1860 for death of a person due to his negligent operation unless his intention is culpable. This has been laid down in which of the following cases? Fine. So A, B, C, D, which says that A. Gyanen versus State 1972, B. Sarveshwar Prasad Sharma versus State 1978,
C. Jacob Matthew versus State of Punjab 2005. D. Munna versus State 2005. So आप लोगों को क्या लगता है? This was asked in the HP examination 2019. So this is kind of a latest exam, and the correct answer is Jacob Matthew versus State of Punjab in 2005. Fine, and in this case, the judgment stipulates the guideline to be followed before launching a prosecution against a doctor for negligence. Fine, so this was held in this case. We'll move further to the next question, and this is very important question, and this question has been asked in many of the judiciary examination. So please mark this question also an important one. Bolam's Bolam's or Bolam's test applies to A. employer's negligence, B. medical negligence, C. environmental negligence, and D is vicarious negligence. So just mark this question, and the correct answer is medical negligence. So option number B is the right answer, where it was held that in the Bolam test, the term the act of the doctor as negligent, we should consider the act of another doctor in the similar circumstances and facilities as existed with the treating doctor. So here you have to just remember that medical negligence and Bolam test are been same. And we'll move further to the next question. Section 304B in chapter 16 of the IPC deal with option number A is rape, B cruelty, D dowry death, D insult to modesty of a woman. So now here you have to see कि 304 of chapter 16 किससे deal करता है. So 304 of IPC deals with the option C, that is the dowry death. Dowry death is under 304 of the IPC. The next question is the section of IPC dealing with the dowry death. Again देखिए, आप लोग हो सकता है कि लगे कि शायद ये क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में आते हैं ना तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलता है. या कभी पूछता है कि 304 बी में क्या है, या पूछता है किस चैप्टर में है, या पूछता है कि डाउरी डेथ किस सेक्शन में है. सो इट कैन बी डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. So I have put all the important question which has been asked, and this question was asked in the Delhi JLO and ALO examination. That is why I have put this question, and it was asked in 2016. So the correct answer is option number B, that is 304 of 304B of the IPC. फाइन. आप लोगों को हो सकता है कि ये दो बार क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में पूछा गया है, तो आपको सेक्शन भी याद हो गया होगा और चैप्टर भी याद हो गया. सो दिस इज़ द टेक्निक ऑफ माई MCQs, जिससे आप लोगों को याद भी होता रहेगा साथ में. एंड नॉट इवन इन दिस दिल्ली JLO एग्जामिनेशन, इट वॉज आल्सो इन द MP सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2017 also, plus UP PCSJ in 2012, and also in Assam judicial examination in 2017. So you can see the repetitive question of this form, and we'll move further. Bride burning is a shame of our society. So who stated this sentence? A. Justice V.R. Krishna Iyer, B. Justice R.M. Sahai, C. Justice A.S. Anand, D. Justice A.P. Shah. So this was asked in the Tamil Nadu examination in 2014. The correct answer is Justice R.M. Sahai, and he led this statement in the case. You have to just pen it down, the name of the case. I'll make it if there is anything. Yeah. So this the case was, let me write it for you, Ashok Kumar versus State of Rajasthan. Fine. And the year was 1919. Just आप लोग एक बार सुन लीजिएगा भले ही, and
you have to just write the name of this case, fine. We'll move further to the next question. Wife of A committed suicide after 2 years of a marriage, and before her death she was subjected to cruelty and harassment by A, and his parents were demand of dowry. A and his parents committed offence: A under section 302 of IPC, B under section 304, this is IPC, and C under 304A of IPC, D under section 304B of IPC, fine. So the correct answer is option number 304B of IPC, fine. And this was after the MP Civil Judiciary Examination 2011. So quite good questions are been asked in the MP, UP and other state examination. So as per this section, where the death of a woman is caused by any burn or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within 7 years of her marriage, and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by the husband or any relative of her the husband or any connection also. So any demand of the dowry, तो उस पूरे एक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? डाउरी डेथ. So I have like made it clear what is all about dowry death is. The next question is, which is not the ingredient of offence of dowry death defined under IPC. So in my previous question I've almost explained what is dowry death, and this is a revised question for you all. So A is unnatural death, B is a death within 7 years of marriage, C is woman was subjected to cruelty or harassment by her husband or by any other person, D cruelty or harassment with woman should be in connection with the demand for dowry. So I hope you all have got the right answer to it. The correct option is C, that is a woman was subjected to cruelty or harassment by her husband or any other person. So this is actually not ingredient, because option number A, unnatural death is should be there, B the death should be within the 7 years of marriage, and D, which is cruelty or harassment with women should be in connection with the demand of dowry, fine. And this was asked in the MP CJ in 2017. The next question states that which one among the following is a necessary ingredient to initiate prosecution against the husband for the death of a married woman under section 304B of the Indian Penal Code 1860, fine. So the options are A, death caused within 7 years of a marriage, B, death caused within 2 years of judicial separation, C, death caused within 1 year of an order of restitution of conjugal rights by a court of a competent jurisdiction, D states that death caused within the 3 years of marriage. मेरे लास्ट 2-3 क्वेश्चन से इस क्वेश्चन का आंसर आप सबका सही होना चाहिए. प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स रिगार्डिंग द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. तो आप लोगों का, मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों का ये आंसर सही हुआ होगा, ठीक है. एंड विल मूव फर्दर. In order to constitute a dowry death, the death of a woman should occur within A, few days of a marriage, B, a few months of a marriage, C, 3 years of a marriage, D, 7 years of marriage. I will not delay with giving this answer. ये सबका ही सही हुआ होगा, and the answer is option number D, that is the 7 years of a marriage. We'll move further. Abetment of suicide of a child is punishable under section 306 of IPC, under section 305 of IPC, under section 309 of IPC, under section 109 of IPC. तो याद रखना इसका जो आंसर है वो है अंडर सेक्शन 305 ऑफ IPC, ठीक है. सो 305 ऑफ IPC says that if any person under the 18 years of age, any insane person,
any delirious person, any idiot, or any person in a state of intoxication commits suicide. So whoever abets the commission of such suicide shall come within the abatement of suicide of a child, which is given under section 305 of IPC. तो अगर हम एक क्विक रिविजन लेते हैं तो 304B क्या कहता है? इट टॉक्स अबाउट द डाउरी डेथ. 304 अगर हम ए बात करते हैं तो आप लोग क्या मुझे बता पाएंगे कि 304A किस चीज़ के बारे में बात करता है? रैश और नेग्लिजेंट एक्ट के बारे में बात करता है, ठीक है. और 304 वो कल्पेबल होमोसाइड के बारे में बात करता है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. फाइन. तो एक क्विक रिवीजन भी मैंने कर दिया है. एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ. तो यहाँ पर याद रखना डेथ से कौन सा सेक्शन पनिश्ड है. तो ऑप्शंस आर सेक्शन 305, सेक्शन 364A, सेक्शन 396 एंड ऑल ऑफ दिस. तो याद रखना कि सेक्शन कौन कौन से पनिशेबल हैं विद डेथ. तो यहाँ पर फ़िलहाल तो सारे के सारे सेक्शंस हैं, मतलब 304 भी है, 364A भी है और 396 भी है. I'll give you कि 304A किसके बारे में बात करते हैं, मैं आपको एक पर बता भी देती हूँ. देखो 305 तो मैंने अभी बताया कि वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ अ चाइल्ड. तो अबेटमेंट इसको कर सकते हैं, अबेटमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है. और जो 364A बात करता है वो किडनैपिंग फॉर रैंसम. तो किडनैपिंग फॉर रैंसम के बारे में बात करता है. 396 बात करता है डेकॉइटी विद मर्डर. राइट. तो इसको याद रखिएगा आप लोग. विल मूव फर्दर. IPC there can be abatement to a person of unsound mind, B an infant, C both A and B, D neither A nor B. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज बोथ A and B. तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस क्वेश्चंस ऑल्सो. तो अबेटमेंट किसको किसको हो सकता है? आप पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और किसी भी इन्फेंट को भी, ठीक है. The next question is the punishment for abatement of suicide is A. Life imprisonment, B. 3 years, C. 20 years, D. up to 10 years. तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? The correct answer is option number D, that is up to 10 years. Minded. ये चंडीगढ़ के ADA एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया था, जिसमें कहा गया है कि जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है जहाँ पर सेक्शन 306 डील कर रहा है, which says that any person commits suicide and whoever abets the commission of such suicide shall be punished with the imprisonment of either description of a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर आप एबेट कर रहे हैं सुसाइड के लिए तो आपको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, ठीक है. तो आप प्लीज़ किसी को, वैसे भी दिस इज़ एन ऑफेंस अंडर IPC, so do not abet anyone for suicide. We'll move further. Abetting the commission of suicide is dealt with under explanation में मैंने पहले ही बता दिया, but here this is a proper question to it. Section 306 of IPC, Section 307 of IPC, Section 308 of IPC, Section 309 of IPC. The correct answer is ऑप्शन नंबर 306. देखिए ये सारे क्वेश्चंस ऑब्वियसली जुडिशरी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जैसे कि ये भी तेलंगाना के एग्ज़ाम में पूछा गया था, इवन MP जुडिशरी के एग्ज़ाम में पूछा गया था. सो आप ये सेक्शन जनरली कोई नहीं कवर करता है, ठीक है. ये सेक्शन 302, 304, 300 से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आप लोग पढ़ते होंगे फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ. सो डू नॉट स्किप दीज क्वेश्चन. एक एक मार्क्स आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है. फाइन. सो दैट इज़ वाई आई हैव पुट ऑल दीज क्वेश्चंस कि सेक्शन वाइज एंड इम्पॉर्टेंट वाइज. तो हम आगे फिर बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है. फॉर प्रूविंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 307 ऑफ IPC, A. Intention to commit murder has to be proved. B. Causing of grievous hurt is to be proved. C. Use of lethal weapon is to be proved. D. Actual injury is to be proved. The correct answer for this question is
इंटेंशन टू कमिट मर्डर हैज़ टू बी प्रूव्ड, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें क्या पूछ रहा है ये, कि जो इंटेंशन है कमिट करने का मर्डर, उसको प्रूव करना पड़ेगा। और ये भी क्वेश्चन यूपीएसजीएस के 2009 में पूछा गया था। तो आप लोग प्लीज़ इसको मार्क कर लीजिए कि इंटेंशन और नॉलेज को प्रूव करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रूव सेक्शन द ऑफेंस विच हैज़ बीन कमिटेड अंडर सेक्शन 307 ऑफ द आईपीसी। The next question is, if a convict undergoing sentence of life imprisonment attempt to murder someone and if hurt is caused, A, he shall be punished with death, he may be punished with death, he shall be punished for causing hurt, he shall be punished with the life imprisonment। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? प्लीज़ कमेंट में एक बार ट्राई भी करिए कि इसका आंसर होना भी क्या चाहिए। मैं करेक्ट आंसर तो बताऊंगी। ये क्वेश्चन उत्तराखंड सीजे में पूछा गया था 2018। So the correct answer is that he may be punished with the death. Option number B is the right option, is the right answer. And this is I'll give you कि 307 के second para में ये question ये part है. This question is actually based on the second para of the 307 of IPC. Fine, we'll move further. A denied food to his wife B for several days by keeping her confined in a room with an intention to accelerate her death. B ultimately managed to escape. In this case, A is guilty of attempt to murder, B A is guilty of wrongful confinement, A is guilty of wrongful restraint, D A is guilty ऑफ नो ऑफेंस। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप एलिमिनेशन से भी देख सकते हैं कि देखिए ऑफेंस डी तो नहीं होगा क्योंकि ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर हम एलिमिनेशन से देखें तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, ए इज़ गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर, इट इज़ क्वाइट क्लोज। इसने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तो किया था, बट जैसे कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इंटेंशन टू एक्सेलरेट हर डेथ, तो डेथ मतलब काइंड ऑफ अ मर्डर। सो द ऑप्शन इज ए इज़ गिल्टी टू अटेम्प्ट टू मर्डर। उसने कोशिश पूरी करी कि उसकी वाइफ भूख से उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है। So this option is A is correct of this question. We'll move further. A with intention of causing death of a child of tender years exposes, tender years is young, okay, years exposes it in a deserted place, though the death of the child does not ensure. What offense A has committed? So option number A is an offense under 305 of IPC, B offense under 306 of IPC, C offense under 307 of IPC, D offense under 308 of IPC। तो आपने ये तो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लेकिन किस सेक्शन में इसका पनिशमेंट है ये ज़रूरी है। ये क्वेश्चन MP CJ में पूछा गया था 2016 और ऑप्शन करेक्ट इज़ 307 of the IPC. Fine, 307 of IPC यही बात करता है कि जब ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन बेस्ड है 307 ऑफ द IPC और ये इलस्ट्रेशन नंबर B है 307 का। We'll move further. Which one of the following offences is not compoundable under IPC? ठीक है, तो यहाँ पर कंपाउंडेबल के बारे में बात करी गई कि कंपाउंडेबल कौन सा सेक्शन नहीं है। सेक्शन 323 बी, सेक्शन 334 सी, सेक्शन 448 डी, सेक्शन 307। तो याद रखिएगा कि कंपाउंडिंग जो है वो कहाँ पर दे रखा हुआ है, कंपाउंडिंग दे रखा हुआ है 320 ऑफ CRPC में, जहाँ पर बात करता है कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कौन कौन से हो सकते हैं नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, जो कि कहता है 307, जो कि कंपाउंडेबल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A picked up a revolver and believing it to be loaded, pulled the trigger with the criminal intention of shooting B dead. Fortunately, the revolver was not loaded and B escaped unhurt. A has committed the offence of A murder, B attempt to murder, C culpable homicide not amounting to murder, and
डी इज ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस. अगेन आई विल स्टेट हियर कि इलिमिनेशन ऑप्शंस तुरंत अप्लाई किया करें ऐसे में कि ए हैज़, जैसे देखिए डी ऑप्शन में लिखा हुआ है ए हैज़ कमिटेड नो ऑप्शन, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है. तो एक ऑप्शन आपका कट हो गया यहाँ पर. तो बाकी के बचे तीन में देखिए मर्डर तो हुआ नहीं है बिकॉज ही स्केप्ड. अटेम्प्ट टू मर्डर और सी में तो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर भी नहीं होगा. तो ऑप्शन जो बचा है वो है ऑप्शन नंबर बी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो अटेम्प्ट टू मर्डर. ठीक है, आप इसको एक बार फिर से चाहे तो देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा. सो इट इज़ अंडर सेक्शन 307 विच सेज अटेम्प्ट टू मर्डर. The next question is, a mixed sugar in B's food, knowing it to be arsenic. B did not take that food. What offense has A committed? So A has committed no offense. B, A is guilty for assault. C, A is not guilty for assault. D, A is guilty for attempt to murder. तो आप लोग को क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? Yes, it is option number D, that is A is guilty for attempt to murder. Fine. And this was asked in the MPCJ in 2014. The next question is, A, with the intention of causing the death of a child of tender age, exposes I guess this question has been repeated. कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा. So this is again attempt to murder. And because this has been already asked in the Delhi judiciary examination also and MPCJ, so that is why this question has been repeated. The next question is, X intending to murder Y mixes poison in his milk and delivered it to Y to drink, but Y gave the milk to his pet dog which died. तो has X committed any crime? क्या लगता है आपको? तो A no offense, B murder, C culpable homicide, D attempt to murder. तो करेक्ट आंसर इज yes, it is attempt to murder. हालांकि उसकी वही ना, ही वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि उसने अपना शायद वो जो ड्रिंक जहर वाला वो ना अपने आप को ना लेकर के उसने अपने डॉग को दे दिया, तो डॉग की डेथ हो गई. बट ही फॉर्चुनेटली वॉज अलाइव. एंड बट हियर जो एक्स ने अटेम्प्ट तो किया ना उसको मारने के लिए, तो इट विल कम अंडर अटेम्प्ट टू murder. Fine. The next question is, which of the following is not an offense? तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शंस है ऑफेंस नहीं है? A suicide, B attempt to commit suicide, C murder, D attempt to commit suicide. देखिए इसमें भी हम लोग समझें तो बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं. और इसमें अगर देखा जाए तो yes, ऑप्शन नंबर A is the correct answer, and suicide in itself is no offense. Rather इसका जो attempt to commit suicide है वो भी एक offense है, वही एक offense है, murder offense है, attempt to murder भी offense है. तो इसमें ऑप्शन नंबर A सही है. उत्तराखंड CJ एग्जामिनेशन 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. Attempt to commit suicide is punishable under section 309 of this is also very easy question. 309 of IPC which says कि attempt to commit suicide, और ये चंडीगढ़ ADA एग्जामिनेशन में पूछा गया था 2015. तो करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ IPC. देखिए कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं पेपर में, तो ये आपका मनोबल भी बढ़ाता है, प्लस कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है. सो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन तो हो ही रहा है, बट लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं. जैसे टाडा है, क्रिमिनल प्रोसीजर भी है, तो बट आप कंफ्यूज मत होइएगा. द करेक्ट आंसर इज IPC. विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज़ द लीगल पोजीशन ऑफ सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पीनल कोड. तो अभी इसको क्या किया गया हुआ है कि ऑप्शन A रिपील, B नॉट रिपील, C इनवैलिड एंड D अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो यहाँ पर इसको बिल्कुल भी रिपील नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट. ये अभी भी है और ये वैलिड है. अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड बिल्कुल भी वैलिड है, पनिशेबल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और रिपील नहीं किया गया है. तो इसको मार्क कर लीजिए. राजस्थान के APO में पूछा गया था 2015.
In which of the following cases of the Supreme Court has declared that 309 of the Indian Penal Code is not unconstitutional and not violative of Article 21 and 14 of the Constitutional. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एचपी में भी पूछा गया था, एपीओ सीबीआई एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था, तो ये बहुत आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। एंड द ऑप्शंस आर ए पी रतिनाम का केस, बी चन्ना जगदीश्वर केस, सी ज्ञान कौर केस, डी संजय कुमार केस। याद रखिएगा ये 5 जजेस बेंच है ज्ञान कौर केस का, बिल्कुल याद रखिएगा। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इट वाज अ 5 जजेस बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिक्लेयर किया था कि 309 जो है वो वैलिड है और कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, और ये वॉयलेटिव नहीं है 21 और 14 का। फाइन, इसको फेवरेट क्वेश्चन कर लीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट held that कि Supreme Court held that had struck down section 309 of IPC, ठीक है। तो ए मारुति एस दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दिस इज अ टाइपिंग एरर इन द क्वेश्चन, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। बी पी रतिनाम एन पटनायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सी अरुणा आर शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डी कॉमन कॉज Register Society versus Union of India. The correct answer for this question is yes, P. Radhinam N. Patnaik versus Union of India, and this was held in the year 1994 Supreme Court, where the Supreme Court said that 309 of the IPC deserve to be affected from the statute book to humanize our penal laws. It is a, they also said that it is a cruel and irrational provision and it may result in a punishing a person against who has suffered agony and would be undergoing the ignominy. So this is a kind of an important case. P. Ratinam का जो case है, it is unimportant, but you have to like just see कि ये भी पूछा गया है HP में 2011 में भी 2018 में भी, तो इसलिए मैंने इसको डाल दिया है क्वेश्चन। एंड प्लीज़ मार्क दिस क्वेश्चन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। We'll move next question, and I hope this is the last question of my this section, and I'll bring more of the IPC MCQs series. So let me read out this question. Which section of the IPC has defined thug? And yes, thug is defined under section 311, B section 310, C section 312, D section 234. The correct answer is option number B, that is 310. याद रखिएगा ये बिहार APO 2012 में पूछा गया था, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो एज पर IPC this question has been asked in many of the examination, plus 310 डिफाइन करता है ठग को, ठीक है। तो दिस वॉज माई लास्ट क्वेश्चन, एंड प्लीज़ एवरीवन डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स आपको कैसा लगा ये वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई विल कीप अपडेटेड यू ऑल विद माई series of MCQ, not only with the IPC, I will bring more of the other subject also. तो आप लोग इसी तरह अपना प्यार और लाइक्स एंड सब्सक्राइब अगर बढ़ाते रहेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं वीडियोस बनाऊं और अच्छे से एक्सप्लेनेशंस के साथ साथ विद डिफरेंट स्टेट्स के इम्पोर्टेंट MCQs। एंड एक बात और, आप लोग प्लीज़ इसको बार बार रिवाइज करने के लिए इसको अपने लिए भी यूज़ करिए, प्लस अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। एंड आई विल गिव द पार्ट 1, इसका जो पार्ट 1 है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। प्लेलिस्ट भी मेरी IPC की तैयार हो रही है, एंड आप लोग प्लीज़ जा कर के मेरी प्लेलिस्ट में IPC के लेक्चर्स भी और MCQs भी देख सकते हैं। I also take online classes, and all the details are being mentioned in the description box. तो आप लोग अगर ऑनलाइन क्लासेस में भी इंटरेस्टेड है, प्लीज़ contact me in the given number. Thank you everyone, take care, stay safe, goodbye.